Welcome to SME IPO. In this sector, Alphalogic Industries is launching its IPO from July 3rd to July 6th at the price of 96 rupees per share. The company is planning to raise around 12.88 crore rupees at this price. So we have Sri Vedant Goel ji and Anshu Goel ji. सर एसएमई आईपीओ में आपका स्वागत है। आप कुछ अपनी कंपनी के बारे में बताएंगे? Hi, Sanfu. Thank you for having us here. Thank And all the very best to SME IPO. You're doing a great job helping investors know about SME companies. So really appreciate that. Alphalogic Industries Limited is primarily a industrial racking and storage solution provider. We are based out of Pune, and the company is primarily into manufacturing of heavy-duty racks, mobile storage compactor systems, MS pallets. We also do staff lockers and mezzanine floors for industries. So we have a good portfolio of clients in this company, right from Swiggy to Aditya Birla Group to Bharat Forge Group to JSW Group. We have Shopper Stop as one of our clients, Rento Mojo, Baskin Robbins you might have heard of. So we have a diverse portfolio of clients that we have worked with, right from very small companies to large conglomerates of India. All of them are, a lot of them are our clients. And though we are a very young company, we have a very good portfolio of clients. And the racking industry in India is pretty large. Okay, it's about some of the research estimates say that it is about a 10,000 crore industry in the Indian market only. Okay, and with the government kind of bringing in the national logistic bill last year, I think it is going to be a game changer for our, not only for our business, but for a lot of infrastructure companies. So we are primarily, we fit in the infrastructure bill of the India. So we call it this way. I would like to call it this way. As India grows, we grow, because in another 15, 20, 30 years, a lot of infrastructure development is going to happen in India. And a lot of warehouses are going to be built. If you look at FCI, for example, Food Corporation of India, they are working a lot towards storing food grains. So every government department is trying to kind of create infrastructure, and I think this is where we play a key role, where our products are going to be useful. Having said that, I think Alphalogic is promoted by a strong group, that is Alphalogic Group, and our promoters are Alphalogic Techsys Limited, which is a multi-business BSE listed company. And I take pride in saying that Alphalogic Techsys Limited was the first startup to get listed on BSE startup platform in way back in 2019 when the startup platform launched. And I think we are very proud about that. And since we listed on BSE startup, I think Alphalogic Techsys revenue has multiplied by 4 times on a consolidated basis, and the profits have more than doubled. So the investors have been very supportive of Alphalogic Techsys, and I think the stock has given decent returns, or more than decent returns, as far as Alphalogic Techsys is concerned. So I think investors should definitely look at our history. Investors should definitely look at the patronage that Alphalogic Industries Limited has got, and I think we are here for the long run. So I think we'll ensure that our investors are rewarded in the long term as far as our company performance is concerned. Thank you, Anshu sir. वेदांत गोयल जी, आप कुछ ऐड करना चाहेंगे इसमें? So जैसे कि अंशु जी ने बोला है कि हमारे we have multiple types of client in our basket. So we basically, our major focus is on heavy duty racks, mezzanine floor, lockers, and mobile compactors. So there are we recently entered into government e-tenders also, and government e-tender mein we are getting very good response because our brand is registered in multiple divisions such as army and defense. So there is huge demand of a product in our industry right now due to logistic policy. ग्रेट सर, जैसे आप लोग पहले प्राइवेट इंडस्ट्रीज को फोकस कर रहे थे, सर ने काफी बड़े बड़े ब्रांड बताए, तो गवर्नमेंट में एक डिफरेंट मैकेनिज्म होता है, लाइक टेंडरिंग, देयर लाइक delay in payment. So like, have we done some kind of work that if payment is delayed, we have good amount of working capital to handle the situation?
So we have got initial success there. So Okay. Bharat Electronics Limited is one of our customers that we have Mhm. got. Mangalore Refinery is one customer that we have got on the government side. So Okay. I think आप देखेंगे तो कंपनी भले ही यंग है, सो पर Mhm. जो प्रमोटर्स का जो विजन है, जो फाउंडर्स का जो विजन है, जो Okay. कंपनी जैसे वेदांत जी कंपनी लीड करते हैं, और जो Mhm. कंपनी के सीईओ है मिस्टर मोंटू भाई गांधी, Okay. he brings about 14 years of experience in the racking industry. Mhm. And Vedant himself is one of the influencers in the steel industry, Okay. which kind of helps us optimize our costs. सबसे बड़ा, Mhm. अगर आप हमारा प्रोडक्ट रेंज देखें तो सारा Mhm. प्रोडक्ट रेंज का रॉ मटेरियल जो है वो है Mhm. फ्लैट रोल्ड स्टील. Yes, तो sir. फ्लैट रोल्ड स्टील की जो हमारी प्रोक्योरमेंट है, आई थिंक Mhm. दैट इज आवर एज वेयर वी आर एबल टू compete. एंड Okay. आई थिंक हम लोग इंटरनली एक फिलोसफी बोलते हैं क्यू राइज. Mhm. सो क्यू स्टैंड्स फॉर क्वालिटी. हम लोग फोकस करते हैं क्वालिटी प्रोडक्ट्स देने का अपने कस्टमर्स को. आई स्टैंड फॉर इनोवेशन. और Mhm. इनोवेशन हमारे द वे वी आर टेक्नोक्रेट्स, वी आर इंजीनियर्स, so Okay. innovation is in our blood. Mhm. So we keep on innovating. And as a matter of fact, हम लोगों ने लास्ट ईयर इकोनॉमिक टाइम्स का ईटी बिजनेस अवार्ड मोस्ट Yeah. इनोवेटिव कंपनी ऑफ द ईयर जीता था. Yes, सो sir. दैट इज समथिंग टू बी समथिंग वी आर वेरी प्राउड ऑफ. एंड आई थिंक हमारी जिम्मेदारियां बढ़ाता है ये चीज. Yeah. सर, आर स्टैंड्स फॉर रिलेशनशिप, which is supreme in any business, whether relationship with people, whether Mhm. relationship with vendors, relationship with clients. Mhm. Then S stands for service. So service एक बहुत बड़ा हिस्सा बन जाता है, क्योंकि हमारे ऑफ द शेल्फ प्रोडक्ट्स नहीं है. We take Mhm. up projects, Mhm. and right from customizing the project to installation, it is all our responsibility. Okay. And most important, E stands for environment. So Mhm. जितना आज के दिन में हमको हमारे प्लेनेट को, हमारे एनवायरनमेंट को बचाना बहुत जरूरी है, जिस तरह के हालात है ग्लोबल वार्मिंग को लेके, पोल्यूशन को लेके. सो दिस बिजनेस वी आर ट्राइंग टू बी एज क्लीन एज पॉसिबल, एज एनवायरनमेंट फ्रेंडली एज पॉसिबल. तो जो भी प्रैक्टिसेस हम लोग कर सकते हैं वो कर रहे हैं, और वो पूरा एज अ ग्रुप वी आर ट्राइंग टू डू दैट. सो वी आर ट्राइंग टू एंटर इनटू क्लीन टेक. हम लोग एथेनॉल का प्लांट सेटअप कर रहे हैं हमारे पेरेंट कंपनी में. That is kind of helping the environment. IT is already a clean business. This Mhm. is a clean business. So we are aware of our corporate responsibility, and we are trying to do our bit to help and save the planet and environment for our future generations. थैंक यू सर. सर जैसे आपने बताया कि आपका मेजर रॉ मटेरियल कॉस्ट इज कमोडिटी आयरन और स्टील. सो इट इज वेरी साइक्लिकल बिजनेस. अर्लियर द प्राइसेस वर वेरी हाई, नाउ इट्स गो. तो आप लोगों के जो कस्टमर के साथ कॉन्ट्रैक्ट होते हैं वो प्राइस में कुछ आप लोगों के पास बफर रहता है, लाइक यू आर एबल टू पास द कॉस्ट? बिकॉज अभी अगर आपने कॉन्ट्रैक्ट लो प्राइस में लिया एंड देन स्टील प्राइसेस इंक्रीजेस, तो आप लोगों के पास क्या मैकेनिज्म होता है कस्टमर के प्राइसिंग के लिए? So basically जब हम लोग कॉन्ट्रैक्ट्स देखते हैं तो हम्म. कॉन्ट्रैक्ट्स में एक तो वी ट्राई टू कीप डिसेंट मार्जिन्स. ओके. आजकल सारी इंडस्ट्रीज कॉम्पिटिटिव है, यस पर सर. हम लोग एक डिसेंट मार्जिन रख के चलते हैं, और एक 5% से ज्यादा फ्लक्चुएशन को हम लोग उसको प्राइस एस्केलेशन में मानते हैं. ओके. और यही हम लोग टर्म्स कस्टमर्स के साथ निगोशिएट करते हैं. हम्म. एंड वी ट्राई टू वी ट्राई टू मेक श्योर कि भाई ज्यादा बर्डन हम कस्टमर्स को ना पास ऑन करते हुए और हमारे मार्जिन को ना हिट करते हुए. आई थिंक वी ट्राई टू स्ट्राइक अ बैलेंस बिटवीन द टू, so that it becomes a win-win situation. ओके. एंड सर Also, जैसे यस. I want to add something. हम्म. We also do RC, that is rate contract with the plant. ओके. So हमारा quarterly we have rate contract with the plant, जिससे प्राइसिंग में अगर फ्लक्चुएशन भी होता है तो we have the price का हमारे पास प्रोविजन होता है वो केस में. ओके सर, थैंक यू. एंड सर जैसे अभी इंडिया के अंदर ई कॉमर्स बहुत लार्ज स्केल में एक्सपेंशन होता है, यू कैन से अमेजन, फ्लिपकार्ट एंड उन सबके लार्ज स्केल के वेयर हाउसेज हैं. तो इससे क्या लगता है, लाइक गोइंग फॉरवर्ड सेम ट्रेंड के अंदर इंडस्ट्री विल कंटिन्यू टू ग्रो? आपको भी एक्स्ट्रा डिमांड की एक्सपेक्टेशन है कि लाइक एवरी बिजनेस इज समवट लाइक ऑनलाइन टाइप में I एंड think that वेयर is a हाउस? very good question, and very good point that you have raised. So I think one of the major segments that we have worked in last couple of years is e-commerce. हम्म. स्विगी हमारा एक बहुत बड़ा कस्टमर यस रहा सर. है. सो हम्म. जो स्विगी ने जो इतने देश भर में जो डार्क स्टोर्स अनाउंस करके बनाए हैं फॉर 10 मिनट ग्रोसरी डिलीवरी, आई हम्म. थिंक वी प्लेड अ पिवटल रोल फॉर इन सेटिंग अप दो स्टोर्स इन क्वाइट अ फ्यू स्टेट्स. तो हम लोगों ने करीब करीब 10 स्टेट्स में काम किया है लास्ट ईयर, और मोटा मोटी 163 कस्टमर्स के साथ हम लोगों ने लास्ट ईयर काम किया है. एंड आई थिंक वी आर कंटिन्यूसली एडिंग न्यू कस्टमर्स. सो ई कॉमर्स में हम लोगों ने, जैसे आपने कहा, स्विगी एक है, फिर रेंटो मोजो एक है, जैसे मैंने ओके. बास्किन रॉबिन्स लिया, और
ओमनी कॉमर्स में शॉपर स्टॉप जैसे मैंने बताया, वन ऑफ आवर Okay. वेरी वैल्यूएबल क्लाइंट्स. So I think e-commerce is one space that is to watch out for, and we definitely are keeping a tab on that, and that will bring growth to the companies, what we believe. And so, like, which are the major customers or competitor which you are facing right now in the industries? आपका कौन competitor है majors? ओके, हमारे जैसे मैंने बताया, रैकिंग मार्केट करीब करीब 10,000 करोड़ की मार्केट है, Yes, sir. एज पर सम रिसर्च एस्टिमेट्स आर कंसर्न. सो Mm-hmm. इसमें सबसे बड़ा प्लेयर जो है वो है गोदरेज. सो Okay. गोदरेज इज वन ऑफ द लार्जेस्ट रैकिंग मैन्युफैक्चरर्स. द Mm-hmm. सेकंड वन इज नीलकमल. Okay. The third player is Craftsman Automation, but Mm-hmm. Craftsman Automation is so almost all three players are into multiple businesses. They are Yes. their focus is not only storage solutions. As Nilkamal is the leader in plastic. Yes, sir. Craftsman Automation is also into automotive solutions. They Mm-hmm. recently entered into storage solutions. Mm-hmm. So these are the three organized players. Okay. और इसके अलावा फिर काफी छोटे अनलिस्टेड छोटे छोटे प्लेयर्स काफी हैं. Okay, सो sir. मोटा मोटी जो ऑर्गेनाइज्ड प्लेयर्स हैं वो करीब करीब 2,000 करोड़ की मार्केट लेते हैं. Yes, sir. Mm-hmm. 80% ऑफ द मार्केट इज अनऑर्गेनाइज्ड. Okay, सो sir. इसलिए जो मैंने आपको क्यूराइज बताया, हम लोग जो बिलीव करते हैं, अगर हम हम्म. अच्छी क्वालिटी, अच्छी सर्विस, अच्छे प्राइस पॉइंट पे देते हैं, Mm-hmm. सो 8,000 करोड़ की मार्केट है जो Mm-hmm. जितना हम एब्जॉर्ब कर सकते हैं. इट्स सच अ Mm-hmm. बिग स्पेस विदाउट कंपीटिंग विद द लार्ज वंस. Okay. आप समझ रहे हैं? Yes, सो sir. अगर हम सिर्फ ऑर्गेनाइज्ड अनऑर्गेनाइज्ड प्लेयर से ही compete करें तो मार्केट Mm-hmm. इज so we are focusing on that market, and I think the time will tell, our efforts will tell कि भाई कितना सक्सेस हम पाते हैं. But the market is good, market is big, and I Okay. think Alphalogic Industries Limited would have a we wish to become one of the dominant players in the industry. Okay. एंड सर, जैसे मैं आपका रिवेन्यू फाइनेंशियल देख रहा था, इट इज अमेजिंग. आपके प्रॉफिट, रिवेन्यू कॉन्टिन्यूस हाई ग्रोथ रेट के अंदर कर रहे हैं, साथ में आपका डेट भी इंक्रीज हो रहा है. तो लाइक बिकॉज बिजनेस इज कैपिटल इंटेंसिव, आप लोगों के गोइंग फॉरवर्ड आपको और डेट रेज करने की रिक्वायरमेंट रहेगी, या आईपीओ फंडिंग वुड बी सफिशिएंट फॉर सम पीरियड ऑफ टाइम? So I think डेट, आपने सही कहा कि डेट बढ़ रही है क्योंकि हमारा वर्किंग कैपिटल इंटेंसिव बिजनेस है. यस सर. और दूसरा क्या होता है, जैसे आपने एक पॉइंट रेस किया था कि भी स्टील जो है कमोडिटी है, उसमें फ्लक्चुएशंस आती हैं. तो हम लोग कोशिश करते हैं कि भी अपना रॉ मटेरियल की इन्वेंट्री कैश में खरीदे ताकि हमको कैश डिस्काउंट्स मिले और हमारी प्रोक्योरमेंट कॉस्ट कम हो. एंड दूसरा हम लोग क्या कर रहे हैं कि हम लोग हमारी इन्वेंट्री बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं. जैसे सारे हमारे जो सिस्टम्स हैं वो मॉड्यूलर सिस्टम्स हैं. सो जैसे रैक्स है, रैक्स के अपराइट्स हैं, वो मॉड्यूलर है. सो जितना हमारा इन्वेंट्री बढ़ेगा उतना हमारा सर्विसेबिलिटी बढ़ेगा. जितनी जल्दी हम सर्विस कर पाएंगे उतने हमारे साथ कस्टमर जुड़ेंगे, बिकॉज एवरीवन वांट्स इंस्टेंटली दीज डेज. और कोई गलत नहीं है, क्योंकि कस्टमर्स चाहते हैं कि भाई जो जल्दी डिलीवर करे, अच्छे प्राइस पे करे और सही क्वालिटी में करे. कस्टमर्स उनके साथ जाना चाहते हैं. तो वी आर होपिंग कि भाई कस्टमर्स हमारे साथ और जुड़ते जाए, हमारी सर्विस और बेहतर होती जाए. सो वर्किंग कैपिटल ही आईपीओ लाने का सबसे बड़ा प्राइमरी रीजन ये रहा कि भाई हम लोग वर्किंग कैपिटल बोल्स्टर करना चाह रहे हैं ताकि हम आगे काम बढ़ा पाए. ओके सर, गुड. एंड सर, लाइक फर्स्ट में आपने बता दिया, अगेन आस्किंग सेम क्वेश्चन, एनी मैसेज फॉर फ्यूचर शेयर होल्डर्स व्हाई दे विल इन्वेस्ट, लाइक आपकी पेडिग्री, एनी अदर मैसेज व्हिच यू वांट टू से टू ऑल द listener who want to invest in your company? I think I would like to speak from my heart here, as Okay. far as shareholders are concerned. Shareholders अच्छे से देखें, अच्छे से परखें, अच्छे से समझें कि वो कौन सी कंपनी में इन्वेस्ट कर रहे हैं. आई थिंक डेविल्स एडवोकेट प्ले कीजिए. हम लोग यंग हैं, हम लोग बहुत छोटी कंपनी है अभी, लेकिन हमारे विजन बहुत बड़ा है. हम लोग कोशिश कर रहे हैं एक अच्छा फॉर्मेडेबल ग्रुप बने. आईपीओ हमारे लिए एंड नहीं है, सक्सेस का मापदंड नहीं है, ये हमारे लिए स्टार्ट है ताकि हम एक बड़ी लीग में जा सकें. और वो तभी हो सकता है, हम अकेले कुछ भी नहीं है, जब लोग जुड़ेंगे हमारे साथ. तो टुगेदर वी कैन, अलोन वी कैन नॉट डू एनीथिंग, बट टुगेदर वी कैन डू अ लॉट ऑफ थिंग्स. आप हमारी पेरेंट कंपनी की पेडिग्री देखें, उसका परफॉर्मेंस देखें, कंपनी का परफॉर्मेंस देखें, और इतना मैं विश्वास दिला सकता हूं कि वी आर एथिकल, वी आर ट्रांसपेरेंट. आप हमारे पहले के भी सारे कम्युनिकेशंस देखें, हमारे एजीएम के कम्युनिकेशंस देखें, और एक अपना जजमेंट करें कि whether we are the right people to go with or not, and based on that investors should take a call. And on my side I can assure that the investors that हमारा विजन और हमारी सोच कंपनी को, अल्फालॉजिक ग्रुप को बढ़ाने की है, और हम पूरी कोशिश करेंगे till our will give our the best effort to make sure that Alphalogic Group becomes one of the most renowned groups in the country with a very good name.
Okay, thanks. If Vedant Vedant ji, would like to add anything to this. So, as Mr. Anshu shared, I totally agree. The vision of the company is very good. The intentions are very clean, and the team here are very dynamic. So, like if you really see, Mr. Montu Gandhi को total 14 years का experience है, and I have expertise in sales and marketing and branding, and my focus is only on to expand the company. आने वाले 2-3 सालों में वी आर एक्सपेक्टिंग कि हम लोग बहुत अच्छा ग्रो करेंगे इंडस्ट्री को लेके, बिकॉज जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है ये लॉजिस्टिक्स को लेके, उसमें गवर्नमेंट और प्राइवेट सेक्टर में बहुत सारा काम हो रहा है, और साथ ही में नई नई ई कॉमर्स की कंपनी आ रही है. कंपनी की ग्रोथ विल बी वेरी वेरी गुड, एंड टू ऑल आवर इन्वेस्टर्स, जैसे मिस्टर अंशु ने शेयर किया है कि ऑलरेडी हमारी हिस्ट्री बहुत अच्छी रही है, और विद देयर सपोर्ट हम लोग अल्फालॉजिक इंडस्ट्रीज लिमिटेड को भी बहुत अच्छी हिस्ट्री आगे भी बनाएंगे, एंड वी विल वन ऑफ द लीडिंग ग्रुप्स इन इंडिया इन नेक्स्ट फ्यू इयर्स. ओके, थैंक यू अंशु जी, थैंक यू वेदांत जी, आपसे बात करके काफी अच्छा लगा एंड विश यू ऑल द बेस्ट फॉर योर आईपीओ. जैसे आपने लास्ट कंपनी को SME IPO से मेन एक्सचेंज में ले गए, होप दैट दिस कंपनी विल आल्सो गो सूनर फ्रॉम लाइक स्मॉल एक्सचेंज टू मेन एक्सचेंज. विश यू ऑल द बेस्ट. थैंक यू फॉर द इंटरव्यू.